रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल ज़िया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब रुख करते हैं सरगोधा का, जहां गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोधा कैंपस ने 2 रोज़ा बैन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोधा कैंपस में इनकाद पजीर हुआ। 3 इंटरनेशनल स्पीकर्स ने अपने टॉपिक्स पेश किए और 6 मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान की बड़ी जामियात से हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का इनकाद बउनवान मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ लैंग्वेजिस्टिक एंड लिटरेचर, जिसमें मजमूई तौर पर एक दिन में 91 टॉपिक्स पर बात हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरे मुल्क से स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना था ताकि वो मुआशरे के इशू को एड्रेस कर सकें और यंग स्कॉलर्स को मौक़े फराहम करें ताकि वह कौमी और बैन अल-अक़वामी मुहक्किकीन से रब्ता कर सकें। I am Myra Raza. I am an MPhil scholar from University of Lahore Sargodha campus. I'm doing here MPhil English Literature. I'm from the Department of MPhil English Literature and Linguistics. I feel privileged to tell that our university, in collaboration with Sargodha University, has arranged a conference for 3 days conference, international conference. But it is an international conference is the first here. But it is overall the second international conference on modern trends in linguistics and literature. It helps us to take us new perspectives, and it is very helpful for all the students. It tells us the new themes and new areas of interest in the research. And I'm very thankful for our HOD and our pro-rector who has arranged this platform for us to allow us to approach different international scholars and who taught us different things about the modern trends in linguistics and literature. Thank you very much. And this is a very big and huge opportunity, especially for our batch, because we have to do our research. And because of this, it is a really good opportunity because we get to know what is happening in the more advanced and more successful universities that are abroad. And we are really grateful that all these people that have come here to guide us and to give us the information about how the things are advancing. It is a very huge and very grateful opportunity for us. And I'm really grateful for our university that is like organizing all this for us students so that we can develop ourselves and we can further our experiences. So I'm really grateful, and I was really grateful for Sargodha University as well because they had organized the first session of the conference and it was a huge success. So thank you. And I'm really grateful for our HOD sir because he was the leading and the most important person who was on the head of the department, and he was the head of us, and he organized and helped us in every step of the organizing the event. So thank you. Assalamu alaikum. My name is Michelle Asif and I'm an MPhil scholar from Department of English, University of Lahore Sargodha campus. Our department has organized an international conference with collaboration with University of Sargodha. For us students, it is proving to be very insightful and thought-provoking as international speakers from various countries are being called here to provide us with new research areas, new research topics. I can say that for us this opportunity is going to be life-changing because we have attended the conference on 4th March in University of Sargodha, and there were speakers from Malaysia, America and different cities of Pakistan, and I am very much satisfied with the efforts of our department, what they are doing for us. Thank you. आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस है मॉडर्न ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। आज इसका दूसरा दिन है और दूसरा दिन चूँकि कोलैबोरेशन से हो रही है, ये लाहौर यूनिवर्सिटी में, कल सरगोधा यूनिवर्सिटी में थी, तो ये जो कोलैबोरेटिव कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इनका सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स, और जब वो बैठते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आइडियाज़ है। अब वो डिस्कस करते हैं बेशुमार ऐसे प्रॉब्लम जिनका सलूशन नहीं होता, जब ये मिल बैठते हैं, बाहर के मुल्कों के साइंटिस्ट हैं, हमारे मुल्कों के हैं, लोकल हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों हैं, तो इससे हमारे
بچے بھی سیکھتے ہیں. اور اس کانفرنس کی جو نہایت ہی اہم بات ہے, میں نے میرا خیال ہے نیومرس کانفرنسیں کروائی بھی ہیں, دیکھی بھی ہیں, لیکن اس میں جو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں. یہ جو ٹریننگ ہے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس, کیونکہ 80% پارٹیسپینٹ ان دی فارم آف سیمینار ہمارے انڈر گریجویٹ اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہی ٹینڈنسی ہم جاری رکھتے ہیں تو یہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سائنس میں, لٹریچرز میں اور پریزنٹیشن میں بھی فلی ٹرینڈ ہوں گی. اس کے لیے میں ڈاکٹر انصر صاحب ہمارے HOD ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے, ان کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ ساری کلیبوریشن کی ہے. اور یہ میرا خیال پہلی انٹرنیشنل کانفرنس ہے کلیبوریشن کے بعد اس یونیورسٹی میں, اور اب یہ آگے انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور ہم جتنا ہو سکے ان بچوں کی ٹریننگ کے لیے, اس ایریے کی بہتری کے لیے اس طرح کام کریں گے. تھینک یو.